2024. I'm Preeti Choudhry. Let me quickly take you through the headlines. Congress targets centre over ex-Twitter CEO's comments, says Twitter asked to block critical voices. Government hits back, says Twitter, in non-compliance with Indian law. That Twitter was in violation of Indian law, laid down Indian law from 2020 to 2022. They were repeatedly reminded that they were in violation of the law. But they were not raided, they were not sent to jail. No employee of Twitter was raided, no employee of Twitter was sent to jail. Prime Minister Modi lashes out at the opposition at the Rozgar Mela, compares rate card party versus safeguard party, launches Parivarwad attack on opposition. Violence, clashes and showdown over panchayat polls in Bengal. Fresh clashes erupt in Bardhaman and South 24 Paraganas. BJP versus ally Shinde Sena in Maharashtra over newspaper ad showing Eknath Shinde as chosen chief minister in 2024. Shinde Sena denies printing ads as Shinde supporters published it. Minor reduction in speed of Cyclone Biparjoy as it moves towards Gujarat coast. Home Minister Amit Shah chairs a review meet on preparedness. लगभग सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल के लिए जितनी भी चीजें तय की गई थी, ये सभी पूर्ण है. After IT raids, ED heat on Tamil Nadu Minister Senthil Balaji in jobs for cash scam in 2014. Properties related to Balaji raided. Chief Minister Stalin accuses BJP of misusing central agencies. All eyes on Modi's US visit. US President Joe Biden to host Prime Minister Modi for a dinner as well during his visit to the US next week. The very severe cyclonic storm Biparjoy is expected to make landfall on Thursday, that is the 15th. Over 2,000 people living in low-lying areas in the coastal regions of Gujarat and Maharashtra have already been evacuated. The IMD has issued now an alert to 4 coastal states of the western coast. Here's a full report. Cyclone Biparjoy has weakened from extremely severe to very severe cyclonic storm. But it is still capable of inflicting damage when it makes landfall in Kachchh on Thursday. Strong winds are lashing the coastal districts of Gujarat and the sea is turbulent. The centre and the state government are taking no chances. Over 20,000 people have been evacuated. कुल मिला के समंदर के तट पे 5 किलोमीटर में अंदर आते हुए 38 गांव और 10 किलोमीटर के अंदर आते हुए 44 गांवों को खास तौर पे हमने उसके जो नीचे के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, ऐसे 4400 से ज़्यादा परिवारों को शिफ्ट करने की कामगिरी समाप्त की गई है. The cyclone has thrown the lives of fishermen out of gear. यहाँ पे जो हवामान का बहुत काफ़ी समय से सुनाई दे रहा है कि हवामान आने वाला है, इसलिए सब फिशरमैन सबकी बोटें बंद कर दिए और सब जगह पे सेव कर दिए. The Indian Coast Guard evacuated 50 personnel from an oil rig located 40 km off Dwarka coast in an overnight operation amid inclement weather conditions. As a precautionary measure, operations at the Kandla post are shut and the crew evacuated. With no movement of containers, hundreds of trucks are stranded at Gandhi Dham. 17 teams from the NDRF and 12 SDRF are deployed to disaster-prone areas. Police personnel are stationed at the seafront to ensure civilians don't venture into the sea. The army is on standby in Bhuj with relief and rescue material ready. Union Home Minister Amit Shah held a high-level meet to review preparedness in 6 coastal districts. सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल के लिए
जितनी भी चीजें तय की गई थी ये सभी पूर्ण है। तटीय सायरन के साथ पीओसी प्रगति पर है, बाकी सारे काम पूर्ण किए गए हैं। Strong winds also lashed Mumbai. Lifeguards are deployed at all beaches. Unfortunately, 5 children aged 12 to 16 were washed away as they ignored warnings and snuck out to Juhu Beach on Monday night. When Cyclone Biparjoy makes landfall, winds up to 195 km per hour are expected to hit the coast. Met Department has warned cyclone might cause extensive damage. Bureau Report, India Today. All right, let's cut across to our reporters. Even though the landfall is expected to be on the 15th, which is Thursday, but evacuation already in place. I want to cut across to our reporter. Joining me is Brijesh Doshi, live from Okha Bandar, Gujarat. Gopi Maniar, live from Kachchh, Gujarat. Paras Dama, live from the Juhu Beach in Mumbai. Cutting across to Gopi first. Gopi, जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हो, कच्छ मैक्सिमम इसका इम्पैक्ट साइक्लोन का गुजरात पर होगा। इवैक्यूएशन कोस्ट से कंप्लीट है क्या अभी? देखिए, इवैक्यूएशन का जो काम है वो लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही महिलाएं और बच्चे, इन लोगों को सबसे पहले यहाँ से इवैक्यूएट करवा दिया। जखाऊ पोर्ट, जहाँ पे जो साइक्लोन है लैंडफॉल होने वाला है, जो उसकी आई कही जाती है, वो जहाँ पे लैंडफॉल होने वाली है, उस पूरे इलाके को करीब 3 किलोमीटर के रेडियस में उसे पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। इसके अलावा अगर कच्छ की बात करूं तो यहाँ पे 144 धारा लगा दी गई है। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। साथ ही समुद्र का जो किनारा है वहां पे भी लोगों को न आने के लिए कहा गया है। साथ ही पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है। लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पे लगातार लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं उनको घरों के अंदर भेज रहे हैं और जो कच्चे घरों में है उनको पक्के स्ट्रक्चर में भेजा जा रहा है। ये इवैक्यूएशन का काम हुआ। लेकिन साइक्लोन के बाद अगर वहां पे साइक्लोन का लैंडफॉल होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, प्राइमरी नेसेसिटी वाली जो चीजें हैं वो किस तरीके से पहुंचानी, उसके लिए भी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी जो है वो की जा रही है। आज मनसुख मांडविया यहाँ पर थे और मनसुख मांडविया ने जो कच्छ के जितने भी अथॉरिटी कलेक्टर और इन सब के साथ बातचीत की है, पूरी एक प्लानिंग की गई है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कैसे उसे रिस्टोर करना है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो प्राइमरी नेसेसरी यानी दूध है या फिर पानी है या खाना है, ये किस तरीके से इन इलाकों में पहुंचाना, तो उसकी भी ये सारी तैयारियां जो है वो की जा रही है। लगातार यहाँ पे एसपी हो या फिर दूसरे पुलिस अधिकारी हो वो गश्त लगा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे प्रीति कि इस पूरे इलाके में, क्योंकि साइक्लोन जो है वो अभी करीब 320 किलोमीटर दूर है जखाऊ पोर्ट से, लेकिन जो हवाएं चल रही थी, तेज हवाएं और पानी जो है, पानी की लहरें भी करीब 5 से 6 फीट तक ऊंची ये पानी की लहरें उठ रही है। तो कुल मिला के कहे तो पूरी तरीके से यहाँ पे प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन तैयारियां कर रही है कि जो साइक्लोन अगर डैमेज करता है तो उसको किस तरीके से नई रिस्टोर किया जाए और किस तरीके से लोगों की जो जिंदगी है उसे नॉर्मल किया जाए। और साथ ही जो पूरा इलाका है वो पूरे इलाके में, क्योंकि साइक्लोन जो है वो 15 तारीख से यहाँ पे लैंडफॉल करेगा, तो एनडीआरएफ की जो टीम है उसे भी डिप्लॉय कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 4 टीम को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। गुजरात में अगर ओवरऑल अब देखने जाए तो 18 एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उसे डिप्लॉय किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा सके, उसका एक प्रयास जो है वो फिलहाल सरकार के जरिए किया जा रहा है और नुकसान कम से कम हो। प्रीति, गोपी बनी रही है हमारे साथ। I want to cut across. Jakhau Port is going to be, at least till now, predicted where the cyclone will make landfall, practically in the eye of the storm. But joining me also from Okha Bandar, Gujarat, is Brijesh Doshi. Brijesh, in terms of evacuation preparation, what are you picking up? Because it might have weakened, but Biparjoy is still a very severe storm. Yeah, the situation is not so normal.
excuse me. The thing is that government has the extremely heavy rainfall has started right now, and I'm right now at Dwarka, and the situation is not so normal right now. Government has started the evacuation last night already. Almost around 20,000 people have been evacuated from the 6 districts which will be affected by the cyclone. So right now everything is government is watching, keenly observing the situation of the cyclone Biparjoy. All right, so Brijesh is joining us from the Jakhau Port. Of course, inclement weather, bad weather already. It started to rain there heavily at that. He's reporting live from the location. We're going to cut across back to him. But evacuation already on in Dwarka, Gujarat. That's also practically one of the areas expected which will face the full force of this cyclonic storm. I want to now cut across just for a brief while to Mumbai, Juhu Beach, which Paras Dhamma would detail for us yesterday, suffered a big tragedy in terms of a young boy who was swimming at the Juhu beach, but this time around the waves are huge, immense current. Paras, what is the latest? Of course, Preeti, yesterday a very unfortunate incident took place where there were 5 youngsters who came here to swim, and 5 of them who drone away over here. 4 dead body has been found by local administration. This unfortunate incident happened yesterday night. Now the precautionary measures has been taken by local administration. This is the Juhu beach where we had seen in normal days lot of people come here to spend time, but as we all know, the cyclone is over here. We can see that cyclone passing through. It will pass through Maharashtra and Mumbai, and then it will land in Jakhau in Gujarat. But precautionary measures has been taken in Mumbai and Maharashtra. This whole Juhu beach has been closed for local people. Local people are waiting outside. Barricading has been done by Mumbai police. Mumbai police officers and Jawan has been posted over here to see if anyone is coming or if anyone need help. Plus lifeguard has already been posted over here at Juhu beach. There are NDRF team also which has been posted over here to save life if any unfortunate incident happens. Again, as we talk about the cyclone, there is no such major impact on Mumbai, but we can see a little impact. We can see the waves which are very high as normal days in Mumbai. Plus there are a lot of very heavy wind which is blowing since morning in Mumbai and Maharashtra. There are some places in Maharashtra like Raigad where alert has been already given by the administration to take care. Plus in Mumbai, the fisherman community has been already told by the administration that not to go for fishing for few days till the time the cyclone get little bit down. So there are major thing which has been done by local administration in Mumbai to save life if anything unfortunate happens. There are many beaches in Mumbai where the same precautionary measures has already been taken. Preeti. All right, I appreciate all 3 of you for joining us. Thank you there. We're going to cut across back to our reporters detailing what will be the impact of this cyclone, which continues to be in the severe, very severe category. With that, also getting you the defining images of Cyclone Biparjoy, which has now developed into a very severe cyclonic storm and is expected to make landfall by the 15th of June. Now, the Indian Met Department has sounded both orange and red alerts across several areas of Gujarat ahead of Biparjoy's landfall. This includes Devbhoomi Dwarka, that is currently witnessing very high tidal waves and strong winds along the coastal areas. Union Health Minister Mansukh Mandavia has held a review meeting on preparedness in Gujarat's Bhuj, action plan being put in place to tackle medical and health emergencies. Meanwhile, with preparations to combat the cyclone impact in full swing, Gujarat police are now deployed near the coast in Gujarat's Navsari to prevent people from venturing into the sea in view of the cyclone Biparjoy. Meanwhile, 5 children aged 12 to 16 were washed away at Juhu Beach on Monday amidst
Cyclone Biparjoy's high tides. One has been rescued, two have drowned, and two are still missing. Indian Navy has conducted aerial patrols amidst ongoing rescue operations. Lifeguards have been deployed at Mumbai's Juhu beach to ensure that the public does not venture into the sea as high tidal waves hit the coast under the effect of Cyclone Biparjoy. Access to beaches and seafronts has been banned as moderate to heavy rain with thunderstorms and strong winds are lashing Mumbai. With 2 days left to file nominations for the West Bengal Panchayat polls, violence erupted at various parts of the state. Violence was seen despite prohibitory orders at nomination centres. Clashes broke out in Bhangar, South Chobis Paraganas during nomination process of Indian Secular Front candidates. Skirmish between ISF and police. Moreover, ISF workers allegedly pelted stones and hurled bombs at the cops. Clashes also broke out in West Bengal's Bardhaman between CPI and TMC workers. However, Mamata Banerjee's government has downplayed the violence, saying only one person has died so far. The State Election Commission has called an all-party meeting today to discuss Panchayat polls. The BJP has slammed the West Bengal and the Election Commissioner, saying he was subservient to Mamata for calling all-party meet after declaring the poll dates and not before. The West Bengal Panchayat polls will be held on July 8th and the results will be declared on the 11th of July. मुझे नहीं लगता कि वायलेंस ज़्यादा हो रहा है। अभी तक 8 तारीख नॉमिनेशन शुरू हुआ, एक आदमी का मौत हुआ मुर्शिदाबाद में और ज़्यादा लोग इंजर्ड भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जहाँ 61,000 सीट में चुनाव हो रहा है, शांति है और सब पार्टी नॉमिनेशन दे रहा है। इस बार नॉमिनेशन नहीं देने को कंप्लेन नहीं आया। एक लॉकेट चैटर्जी को लेके एक इंसिडेंट हुआ, वो भी तो सल्टा गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वायलेंस ज़्यादा है। यह देखने को मिल रहा है बंगाल के लोगों को कि तृणमूल कांग्रेस किस तरह से अपना जमीनी स्तर पर का जो समर्थन है वो खोने के बाद पूरी तरह से पागल हो चुका है। अभी पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रहा है, जिस घिनौना राजनीति करने का कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, मैं इसका कड़ी भाषा से निंदा करता हूं। I want to cut across to my colleague Ritik Mondal, who's joining us live from Kolkata with the latest updates coming in. Ritik, would you take us through the violence that has unfolded at the back of Panchayat polls? What's the latest that you're picking up? Preeti, Bengal is boiling, it's simmering just ahead of Panchayat election, and as we speak, that we know even today several reports of violence being reported across Bengal beach in Bhango today. ISS supporters and TMC goons allegedly they engaged themselves in a pitched battle over filing nominations. Most of the cases, the opposition candidates they were stopped allegedly by TMC. Well, they headed to the the nomination center. But at this point in time, what we can pick up, what we can share with our viewers, that Calcutta High Court gave a very crucial order today over this Panchayat election. It has stated that there will be no extension of filing nomination, and of course, it also the court has stated that State Election Commission should and shall requisition to the center for central forces to be deployed in the sensitive districts. Remember, the state election commissions have already identified 7 sensitive districts across Bengal ahead of Panchayat election, including South Chobis Pargana, North Chobis Pargana, Jalpaiguri, Birbhum, and many more. And the court has stated that State Election Commission, if required, they can requisition to the center for central forces to be deployed during this all-through Panchayat election process. But the court has also gone on record stating that there will be extensive, video recording, particularly the CCTV installation should be there
and there will be live broadcast of every movement in polling stations or nomination centers, and that will be connected to the state election commissions. And these are the letters what we are picking up. So we understand that at this point in time, the State Election Commission have already identified 7 districts where things are not pretty much good. Things are out of reach of the state police, and court has directed if needed. It's already, they have said that it's State Election Commission prerogatives where additional forces are required. They should raise the requisition for central forces to be deployed there, but the funds for the for central forces this time to be given by the center and not all right. Ritvik, we're going to continue coming to you for more updates there. So things right now are not normal. Lots of violence being witnessed in West Bengal. We're going to keep an eye and get our viewers the latest. A quick break. When we come back on the other side, we have breaking news. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? 4, 3, 2, 1, now. It's one of the world's most formidable anti-ship weapons, the supersonic Brahmos cruise missile, and it's made exclusively in India. And now, over a year after India opened its export book with a supply deal to the Philippines, more Southeast Asian countries threatened by Chinese aggression are lining up for the Brahmos missile system. India today has learnt that 2 more major nations, Vietnam and Indonesia, are very close to finalizing orders for this weapon. Both Indonesia and Vietnam have extensive coastlines and face security challenges in the Indian Ocean and South China Sea, where there are territorial disputes with China. The Brahmos missile's long-range and anti-ship capabilities can bolster maritime defenses of Vietnam and Indonesia and deter any aggressive actions in their territorial waters. Vietnam, as a neighboring country, is wary of China's expanding influence and power projection activities in the region. The Brahmos missile, with its ability to strike targets from long ranges, can act as a deterrent against any potential aggression or encroachment by China in the South China Sea. The Brahmos is in service with all 3 Indian armed forces as of now, with the Indian Army in the land-launched configuration, with the Air Force in the air-launched configuration from Su-30 fighters, and with the Indian Navy in a ship-launched version, as well as shore-based coastal defense variants that target ships at sea. This last version is the one that both Indonesia and Vietnam are now interested in acquiring. Vietnam's defense minister will be visiting India later this month and is likely to discuss and firm up the deal with his Indian counterpart, though an actual announcement may only come later. For Indian defense industry and the export push, 2 more nations acquiring the Brahmos will be a major boost, not just financially, but in terms of India's strategic partnerships in the Asia-Pacific in the shadow of an aggressive China. Bureau Report, India Today. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching
All right, viewers, that's a big news break coming in view of Lok Sabha elections 2024, and this is big. It's a huge inside scoop on BJP's 2024 poll strategy. It also is a reality check for Rajya Sabha BJP leaders who are cabinet ministers. Cabinet ministers who are Rajya Sabha MPs will now all contest polls. This will include Nirmala Sitharaman, Mansukh Mandavia, Dharmendra Pradhan. All of them will contest election. Will it include the likes of Mr. Piyush Goyal? Ministers have been asked to look for potential safe seats. Hardeep Puri and Sindhya also likely to contest. That's the big news break that is coming in. External Affairs Minister Mr. Jaishankar also likely to contest. I want to quickly cut across with this big news break. Coming up is my colleague Himanshu, who is joining us with the inside details. Himanshu, कौन से मंत्री हैं जो अब राज्यसभा से मंत्री हैं, वो अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर चुनाव लड़ेंगे, पीयूष गोयल चुनाव लड़ेंगे, धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ेंगे, निर्मला सीतारमन चुनाव लड़ेंगी क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की खबरें आ रही हैं प्रीति, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक संदेश दे दिया था मुख्तार अब्बास नकवी को, उनके 2 टर्म राज्यसभा पूरे होने के बाद, कि आपको लोकसभा लड़ना होगा। और आप याद कीजिए, जब मुख्तार अब्बास नकवी का 2 टर्म का राज्यसभा खत्म हुआ था और वो मंत्री पद पे थे, तब आजमगढ़ रामपुर को लेकर बाई इलेक्शन होना था। उन्होंने मना किया पार्टी लीडरशिप को। पार्टी लीडरशिप ने उनको कहा कि आपको केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, और उनका इस्तीफा हो गया। उसके बाद पार्टी आला कमान ने ये साफ संदेश दे दिया था उन दिग्गज मंत्रियों को जो 2 बार या उससे ज्यादा राज्यसभा के टर्म रह चुके हैं। आप देखिए, भूपेंद्र यादव के 2 टर्म हो जाएंगे अप्रैल 2024 में, धर्मेंद्र प्रधान के 2 टर्म राज्यसभा के 2024 में, निर्मला सीतारमन जो है 2022 में उनको राज्यसभा मिला है, वो 28 तक है। लेकिन जिस तरीके से वो पिछले कुछ दिनों में चेन्नई के अंदर लगातार उनके दौरे रहे हैं, और एक उनका वीडियो वायरल हुआ था कि चेन्नई में वो एक वेजिटेबल मार्केट गई थी और वहां पर वो सब्जी खरीद रही थी एक आम नागरिक की तरह। उसके बाद ये तय हो गया था कि निर्मला सीतारमन भी जो है वो पार्टी आला कमान के संदेश के बाद वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो भूपेंद्र यादव के 2 टर्म राज्यसभा के पूरे हो चुके हैं, उनको भी वो अपनी सीट जो है अजमेर, जहां से उनकी पूरी पढ़ाई हुई है, भिवानी लोकसभा में तलाश रहे हैं। दोनों में से कहीं पे भी वो लोकसभा लड़ सकते हैं। दोनों जगहों पे उनकी तैयारियां और सर्वे का काम जारी है। धर्मेंद्र प्रधान जो है डेक कनाल एक सीट है उड़ीसा की, वहां से वो तैयारी कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ओपनली उड़ीसा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 में। पार्टी अगर उन्हें सीट देगी तो जरूर लड़ेंगे। मनसुख मांडविया के 2 टर्म राज्यसभा पूरे हो जाएंगे 2024 में, भावनगर से वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, उनका 2.5 टर्म यानी कि 1 टर्म 2016 के अंदर जो है उनको 2.5 साल का टर्म मिला था, उसमें उनको दोबारा से मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन उनके 2 टर्म से ज्यादा राज्यसभा हो गए हैं, तो ऐसे में वो जो उनकी परंपरागत सीट है अमरेली, वहां से अपना जो है भाग्य आजमा सकते हैं। हिमांशु, एक चीज बताइए, ये क्या अल्टीमेटम दिया गया है कि देखिए राज्यसभा से तो आप हैं, पर अगर आप मंत्री हैं आपको चुनावी क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, वोट मांगना पड़ेगा और चुनाव जीत के आना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल प्रीति, पार्टी की तरफ से संदेश दिए जाते हैं, अल्टीमेटम नहीं दिया जाता। और उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में ये जो दिग्गज मंत्री हैं, इन्होंने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों को जो है आइडेंटिफाई भी कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया, धर्मेंद्र प्रधान है, निर्मला सीतारमन है, मनसुख मांडविया है, भूपेंद्र यादव हैं, और पुरुषोत्तम रूपाला वो खुद अमरेली से अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। साथ ही साथ हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था अमृतसर से, उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो है हरदीप पुरी जो है किस्मत आजमाएंगे लोकसभा के लिए। अब ये देखना है कि वो ठीक ही किसी लोकसभा सीट से अपनाते हैं जो सिख बहुल लोकसभा सीट है, या फिर वो अमृतसर। हिमांशु, कोई ऐसे मंत्री हैं जिनको छूट होगी जो ब्यूरोक्रेसी से चुने गए हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ले लीजिए, रेल मंत्री ले लीजिए। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जहां तक मेरे को जानकारी है, वो भी अपना चुनावी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और वो तमिलनाडु से ही चुनाव लड़ने वाले हैं।
इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन रेलवे मिनिस्टर्स जो हैं वो उड़ीसा उनका कार्यक्षेत्र रहा है, लेकिन उनका जो गृह क्षेत्र है वो राजस्थान है। अब राजस्थान में किस सीट से अगर उनको कहा जाएगा तो चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी अभी अश्विनी वैष्णव को कोई भी इस तरीके की संदेश जो है वो पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन इतना जरूर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो गुना लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र से वो या उनके पिता माधवराव सिंधिया जो हैं वो लोकसभा चुनाव जीत कर आते हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप हमसे जुड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के सपने देख रहे हैं, क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? पर जो खबर, द न्यूज दैट हिमांशु हैज ब्रोकन इज बिग व्यूअर्स। इट सीम्स नाउ देयर इज अ क्लियर communication by the party high command where Rajya Sabha BJP MPs are concerned, who are ministers, that you will have to go down, seek votes and win an election and come back where Lok Sabha is concerned. Very, very interesting development. With that, I want to get into a quick break. To stay with us on the other side is To The Point. I was prepared for the worst. I was prepared for him throwing me out of the house, throwing a tantrum, not accepting me. But I had all these preconceived notions which never really happened.